Welcome back. My name is Amran, and in this lesson, we will learn how to introduce yourself in Urdu language. We will learn some simple sentences we use in our routine life to introduce yourself. And at the end of the lesson, I will introduce you myself as a demo so that you can learn how to practically introduce ourselves in Urdu language. Let's have a start. Very first, when you meet someone, you will say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. That's mean peace be upon you. After this, you can tell your name. Hi, I am Ali. Assalamu alaikum. मैं अली हूँ. Assalamu alaikum. मैं जेनिफर हूँ. This sentence for both gender. Or there is a different way you can introduce your name. My name is Ali and I am a doctor. मेरा नाम अली है और मैं डॉक्टर हूँ. माई नेम इज़ जेनिफ़र एंड आई एम अ डॉक्टर. मेरा नाम जेनिफ़र है और मैं डॉक्टर हूँ. इज इट क्लियर? दिस सेंटेंस फॉर बोथ जेंडर. आफ्टर दिस यू कैन टेल योर नेशनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम अमेरिकन. मैं अमेरिकन हूँ. और if you are belong to a city, you wanna tell the name of your city or your place, you can say I am from Australia, I am from Moscow. मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ. repeat with me. मैं and the name of your place like England से हूँ. If you are working or if you are study, you can say I am studying at Oxford University. मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. रिपीट विद मी. मैं ऑक्सफोर्ड और नेम ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ. पढ़ता फॉर मैस्कुलिन जेंडर एंड इफ़ यू आर अ फेमिनिन जेंडर यू विल से पढ़ती. रिपीट विद मी फॉर फेमिनिन जेंडर. मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हूँ. एंड इफ़ यू आर वर्किंग और यू हैव अ जॉब, you can say I am working at नेशनल बैंक. मैं नेशनल बैंक में काम करता हूँ. रिपीट विद मी. मैं नेशनल बैंक में काम करता हूँ. ओके, you can put name of any other institute or any other company, and if you are feminine gender you will use करती, not करता. For feminine gender, let's repeat once again. मैं नेशनल बैंक में काम करती हूँ. If you are new arrival, then you can say I am new here and learning Urdu language. मैं यहाँ पर नया हूँ और उर्दू ज़बान सीख रहा हूँ. रिपीट विद मी. मैं यहाँ पर नया हूँ और उर्दू ज़बान सीख रहा हूँ. ओके, दिस सेंटेंस फॉर मैस्कुलिन जेंडर. एंड इफ़ यू आर फेमिनिन जेंडर you will use नई and रही. Let's repeat for feminine gender. मैं यहाँ पर नई हूँ और उर्दू ज़बान सीख रही हूँ. Okay, at the end we have some question you can ask to other person while you are introducing yourself. For example, you can ask what is your name. आपका नाम क्या है. रिपीट विद मी. आपका नाम क्या है. दिस सेंटेंस फॉर बोथ जेंडर. एंड यू कैन आल्सो आस्क व्हाट डू यू डू. आप क्या करते हो. आप क्या करते हो. दिस फॉर मैस्कुलिन जेंडर. इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ फेमिनिन जेंडर यू विल से आप क्या करती हो. रिपीट विद मी. आप क्या करती हो. एंड देयर इज़ वन अनदर क्वेश्चन यू कैन आल्सो आस्क डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोलते हो. क्या आप इंग्लिश बोलते हो. इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ फेमिनिन जेंडर यू विल से क्या आप इंग्लिश बोलती
हो. Okay, now it's time to introduce you myself. अस्सलामु अलैकुम. मेरा नाम अमरान है और मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अब मैं ओमान में रहता हूँ और यहाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. मैं यहाँ पर नया हूँ और अरबी ज़बान सीख रहा हूँ. आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. अपना ख्याल रखना. फिर मिलेंगे. Allah Hafiz. This is end of the lesson. I hope this lesson will help you to learn something new. If you are new to our channel, don't forget to subscribe us below to continue your Urdu learning. Have a nice day. फिर मिलेंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.